Hey everyone, welcome to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, I'm here with part 2 of Bella's album reaction, Home the album. So today, right now, I'm going to be reacting to the remaining songs, which is I'm a Kid, Velli, Spacenight already have reacted to. Mwah, my favorite song. Then Collapse, Damn, Antidote, and that's it. That's it. So yes, skipping Spacenight, I will be listening to all the other songs. So let's not delay this any further. Let's start with, oh no, there's one more song. For My People, sorry, I missed this one. For My People, I'm a Kid, Velli, Collapse, Damn, Antidote. Ye gaane. So let's start with For My People right away. मेरा म्यूजिक मेरे लोगों के लिए मेरे लोगों को पता है मेरा नाम क्या है For my people, ये म्यूजिक अब सुकून, ये म्यूजिक में जुनून, हम सब में कहीं ना कहीं छिपी खूबियां जरूर। हम हो गए मशहूर जब से चुन लिया फिर दूर, भागना छोड़ मत, नजरें ऊपर रखना सीख। 10 को बम्प करा वाइब खुद ले लेगी स्ट्रीट्स, उम्र उन पे लागू नहीं होती जो देखें ड्रीम्स। अपने सपनों से मैं करता हूँ अब पूरी नीड्स, छोटे कुछ तो सीख। मेरे लिबास में दो शख्स छिपे हैं, हमें कला और घमंड दोनों संग मिले हैं। मेरा कर्मा मुझसे बातें करना चाहे आईना, कहे तेरे अंदर लाखों गुनहगार छिपे हैं। इनके फीके चेहरे सारी चीजें बयां करें, मैं दुआ करूं मेरे हिस्से में बस वफा रहे। ये बोले इमेज मेरी बुरी जिसे पाप लो, मैं कहना हाँ जी जो उखाड़ना उखाड़ लो। रातों में गेड़ियां मैं मारूं नहीं, जब स्टूडियो में गाने लिखूं क्या हो रहा है दुनिया में ये लौड़ा जानू नहीं। मैं अपने में मगन, मैं लॉयल अपनी वाली से, मैं दुनिया की ये 36-14 पालू नहीं। मैं मुश्किलों को टालू नहीं, मुश्किल कम, हर दिन इतना हसल करके जीना बन गई आदत। तब कलम देती राह तब दुनिया माँ से मेरी कर रही शिकायत। अब बेटा तेरा दिखे बैनरों पे बड़े बड़े चैनलों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहाड़ियों में माँ को दिखू तालियों में अब शीशे नीचे कॉपी अंदर खुले ऑटोग्राफ, दरवाजा खुला बेला बाहर आता फोटोग्राफ। सब देखे बेला कड़क रखता अपना मोनोग्राफ, बेला शाइन करे लगता चलता फिरता होलोग्राम। डैम ये रैपर्स पेंगुइन, इनमें कोट कोई नहीं, इनकी नॉलेज इतनी करप्ट इनका दोष कोई नहीं। इतना हेट ये सब लावा बनना चाहते हैं, अंधे लोग विजन भारी रखना चाहते हैं। मैं नशे इतने करूं कितनी बीटे फाड़ी याद नहीं है, स्टूडियो में बैठे बीट की उतारे आरती। हम चप्पलों में स्टेज पूरा नाप देते हैं, ये बस बात सुन के ग्लास पानी मांग लेते हैं। अपना सगा कौन, मैंने नकली रिश्ते बहुत देखे, जिनके कपड़े साफ कैसे वहीं सबसे पहले हजारों आंखों के हजारों गम। देख बुलाने के लिए मैं पीता राम, थोड़ी थोड़ी नजरें मिला पाना हमसे मुश्किल पड़ेगा। जब पहला आदमी जो उड़ने लगेगा, जब पहला हर एक जान को इंस्पायर करेगा, जब ये लड़का इनमें अपने जैसी फायर भरेगा। सोना छोड़ अब मैं सोना सिर्फ पहनता हूँ ब्रो, मैं बस लॉयल रहता हूँ कला से और फैलता हूँ ब्रो। कुत्ते भागे जब जंगल में चीता टहलता है ब्रो, यहाँ पे गेम सारा बुद्धि और ईमान का है ब्रो। मेरे लोगों को मैं जैसा भी हूँ ठीक लगता हूँ, क्योंकि अपने चाहने वालों को मैं हील करता हूँ। मुझसे पहले भिड़ने वाली ऐसी टीम रखता हूँ, हर दिन खुद से कंपटीशन खुद को बीट करता हूँ। जहन में हर दिन एक आवाज कहती तेरे अंदर के इंसान को पहचान मैं भी, उसकी सुनूं तो एक खाई और एक कुआं दिखता है। बेला गिर जाए इसमें गिर के उठने वाला टिकता है। ये सब चले मेरे मन में, जो चले गए उन्हें देता फक नहीं, पर यादें मेरी आंखें करे नम। ये बेला खुश नहीं है खुद से, पर खुशी मेरे आसपास रहती नहीं है कम। मुझे छोड़ो मेरे हाल पे, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। Sounds like DOP, dope. Whoa, this suddenly took a very dark turn, guys. The feel of the album, like it was pretty dark, but I think this became even darker. Ye wala gana For My People. So he's existing because of his talent, his hustle, and recently what happened is that he deleted everything on his Instagram. I don't know, something happened. I saw his Instagram story and he was really freaking upset. I don't know what happened. I don't keep up with hip hop news and stuff, but internet se kuch to pata chalta. But when I looked through Instagram and I suddenly saw his story, and then I went to his page and like he literally unfollowed everybody, he deleted everything. So I was like, okay, something major has happened. And I was asking this in part 1 only, that specifically when Riot was playing, just wo thoda flex kar raha tha, and sort of it felt like he was giving subliminals. But then I read a couple of comments where you told me that no, he doesn't have any beef. It was a generic song. He doesn't really have a beef with anybody. So
I don't know what happened, guys. Really, I mean, something nobody would take such a step unless and until something really or someone really hurt him emotionally. So when this song was playing, मुझे वही याद आ रहा था कि ये recently अभी जो event हुआ, and I don't know, somehow this song is very fitting to whatever would have happened right now, which is something very, very serious, I feel. But what a beautiful, sad, melancholic, basically it's a very melancholic track. And I loved his cadence here because he sounded really sad, but he is also sounding in a way that, you know, I'm going to move on. I'm going to keep moving on, because he's again talking about backstabbing, जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है सगा कौन है, पराया कौन है. So definitely he has met people in his life who have taken advantage of the guy, or who have maybe pretended to be his friends, and they are like, you know, in behind his back they are saying bad stuff about him, because यहाँ पे he's also saying that सबको बस झगड़ा करना है, बीफ करना है, सब लावा बनना चाहते हैं, and all of that line. So that was okay. I was thinking, okay, fine, मतलब generally भी बोल रहा है तो किसी को दिमाग में रख के ही ये गाना लिखा होगा, right? उसने किसी को तो दिमाग में रख के लिखा होगा, like because the song also suggests that he's talking about that when he's getting famous, people are sort of, you know, थोड़ा ताने मारने जैसे होता है ना कि हाँ तुम्हारा बेटा देखो टीवी पे आ रहा है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, सब बोले उसकी माँ को. He said that. So all of these things making me feel that there is some sort of sadness inside of this guy, and he is also like, but he likes to be in his shell. He likes to be in his shell because I think the moment he probably, you know, tries to become an open book, or tries to be a little vulnerable or open to somebody, maybe they have really not reciprocated in the same way. That's what it feels like to me, this song. But oh, it was really well done. I felt so sad, and I think because अभी recently ये हुआ तो मुझे और बुरा लग रहा है गाना सुन के, मतलब बुरा in the sense गाने को सुन के नहीं, but feeling the feel that I'm getting, I feel bad. So I think the song did its magic, I feel. Maybe. So wow, this is a very superior song, and suddenly matlab the mood of the entire thing shifted all of a sudden. So let's see how the remaining tracks are. Okay. Oh, now I'm intrigued. So the next one is I'm a Kid. Okay. इसमें कुछ है क्या? Oh, there are. Hey. पहनूं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है. पहनूं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है. मतलब मेरी बनती नहीं, I think he's talking about his alter over here, Astro, right? He's not really talking about himself, or is it? शायद मेरे अंदर कलाकार जो मेरे बाप ने पहचाना नहीं, 9:30 के बाद घर पे गाने वाने गाना नहीं, मुझसे पैसे लेके किसी स्टूडियो में जाइयो मत बेटा, ऐसी चीजों को कभी दिल से लगाना नहीं. म्यूजिक क्या ही देगा, अब मैं खेलूं लाखों में, कल मैं गलियों में था अब बड़े सितारों में. पापा मुश्किल है अकेले सब कुछ हासिल करना, तेरा लड़का हीरा पहनेगा किताबों से, जब मैं गिरा तो कोई साथ देने वाला नहीं, जैसे भी हालात मैंने मुश्किलों को टाला नहीं, जीना तो जिंदगी सिखा देती है, अब मैं जैसा भी हूँ everybody knows me के पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है. पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है. शायद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, शायद मेरे अंदर पाप है, मेरी कलम ये है वान और आजाद है, शायद मेरे अंदर थोड़ा सा इंसान है जिसने जिंदा रखे मेरे सारे ख्वाब है. अब मैं थोड़ा थोड़ा जी लेता हूँ, गम हो या खुशी पी लेता हूँ, मैं बस दुआ करूँ सगे बचे रहे, बाकी सभी खींचने में लगे रहे, कभी नीचे कभी फोटो मेरी bitches, मैं बस तोलूं फिर मैं तोड़ूं हर दिन खुद की लिमिट्स, साइको करता मल्टीप्लाई डिजिट्स, हर दिन कहता मेरा जानवर है पहला, get up go and kill him.
अब घर में म्यूजिक बजता है 9:30 या 2:45 किसको फर्क पड़ता है अपना हर एक दिन कलाकारों में गुजरता है सबको साथ लेके चलने वाला ही उभरता है फैक्ट्स उम्र सबक देती है जिसमें कला जितनी ज्यादा उसको घमंड देती है जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता उससे ज्यादा छीनेगी मगर सच्चे रहने वालों को ये सब्र देती है तो सब्र रख अब स्टार्स लिखे दिए में वो सब I'm gaining power मुझ पे सबका ट्रस्ट मैं सबसे ऊपर रखता अपना टर्फ The only one above पहनूं अपने महंगे महंगे कपड़े इन आंखों में नशा मेरा दिखता है मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े इन आंखों में नशा मेरा दिखता है मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है उसे मेरे अंदर I'm a kid, bitches. I love you, Dad. Okay, I want to know the story here. I think Hustle mein probably he would have narrated his story and stuff like that, like from where he started and his interest. Because if it is a reality show competition, then of course वहाँ पे contestants अपने बारे में बहुत बताते हैं कैसे उन्होंने स्टार्ट किया उनको क्यों इंटरेस्ट आया किसी भी टाइप की म्यूजिक पे या किसी भी आर्ट फॉर्म में एंड देन कब से वो लोग कहाँ से पैशन आया कौन उनका इंस्पिरेशन है फैमिली सपोर्ट एंड ये सब बहुत कुछ दिखाते हैं एक्स्ट्रा रियलिटी शो में आई एम श्योर बेला की स्टोरी भी दिखाई गई होगी सो आई वांट टू नो दिस एंटायर लाइक नाउ दिस हैज इंट्रिग्ड मी बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू द फादर This is specifically directed to the father. I love the beats of this song. So lyrics aside first, I love the beats of the song and I love the way he is used the auto-tune over here. Na 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 na. ये गाना तो एकदम एक vibe है. Definitely I'm adding to my playlist. This is a really nice song. I think for a lot of you this is your favorite song from the album क्योंकि बहुत comments पढ़े थे that I'm a Kid is your like favorite song which I completely understand why because it's a mood maker in a way that I mean he's not really saying anything bad about his father but he's from a kid's perspective he's saying he's a little disappointed that the parent could not put his trust on me because हमें कुछ क्रिएटिव करना था कि गाने वाने मत बजाओ इनसे दिल मत लगाओ स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग व्हेन ही सेड कि इनसे कुछ पैसा वैसा नहीं आता है एंड इट इज ये कितने लोगों की यहाँ पे रियलिटी है आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट विद द म्यूजिक आई एम श्योर ये बहुत लोगों के साथ रिलेटेबल होगा जहाँ पे यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग आपको वो करना है बट मोस्ट ऑफ अस जैसे मैं भी उस फेज से गुजरी थी जहाँ पे वी हैव बिन टॉट दैट नहीं आप पढ़ाई करो आप अच्छे मार्क्स लाओ 10th 12th में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ देन यू हैव टू गेट बिकॉज दैट विल गेट you have to give entrance exams and then that'll get you in a good college and getting in a good college you'll get a good job then MBA karo and I've been through that so I know so that way I could relate where I've also heard कि अगर नहीं तुम ये वाला फील्ड लोगे तो उसमें इतना स्कोप नहीं है जॉब मिलने का so you need to play the safe side you need to be in the safe side because you don't have like बोलते हैं ना हमारे पास उतनी कोई फाइनेंशियल उतनी बड़ी बैकिंग नहीं है कि आप कुछ ऐसा रिस्क ले सको that you need a salaried job basically because for me also and I know how difficult it is because for me also to sort of do this thing full time was a big decision because to leave your comfortable salary जब वो जो मंथ के एंड में जो चेक आता है ना जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है एंड देन यू सी दैट अमाउंट ऑन योर बैंक अकाउंट इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट सो इट टू गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग कि नहीं वो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट वो काम करेगा या नहीं करेगा यू डोंट नो I to still see this YouTube thing is still an experiment for me and जहाँ तक म्यूजिक वीडियोस की बात होती है म्यूजिक वीडियो रिएक्शंस उसमें तो मैं कुछ कमाती भी नहीं हूँ बिकॉज दोज आर ऑल कॉपीराइट ऑल म्यूजिक वीडियोस आर कॉपीराइट क्लेम्स बिकॉज राइटफुल ओनर को जाता है उसका कॉपीराइट क्लेम सो आई मीन आई डिपेंड अ लॉट ऑन माई रिव्यूज दैट या फिर इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेलर्स में म्यूजिक होता है तो वो कॉपीराइट हो जाता है सो द ओनली थिंग विच आई नो विच इज लेजिट गेटिंग मी द मनी आर माई रिव्यू सो दैट्स वाई आई सी कॉमेंट्स की नहीं किसका रिएक्शन कब आ रहा है
Guys, I'm trying to do this full time, so it has to be a mix of things, and I want to focus more on my reviews because that is going to generate me more, more revenue. If I want to sustain this, if I cannot sustain this, then तो मुझे सब बोरिया बिस्तर बांध के वापस अपने जॉब पे जाना पड़ेगा. So I could relate that अब वो बोल रहे हैं ना, अब मैं पहनता हूँ महंगे कपड़े, अब तो मतलब, but he had to go through that. He had to go through that to convince everybody कि नहीं मुझे करना है, I have to do the hustle, and he did not give up. So in a way it is sad, and in another way it has inspired me. In another way, this is the same thing that gave me inspiration जब मैंने कृष्णा का OG सुना था, and it actually motivated me so much, and it still motivates me when I listen to it. But this song worked as a reverse psychology inside me. I don't know why. Like, I'm a kid. It's very very specific to his father कि वो अपनी life के बारे में बता रहा है. But in a way it worked for me because I could find it relatable, and I think a lot of you could probably find this song very very relatable, where your parents tell you that you can't do this, you have to get a stable salary job, and inside you कभी कभी आपके अंदर वो fear बैठ जाता होगा कि नहीं पापा मम्मी ठीक बोल रहे हैं, नौकरी करनी है. But कुछ वो होते हैं जो rebel बन जाते हैं, and if you're keeping at it, I'm very happy for Bella. Everything worked out well, and he can wear महंगे कपड़े. So yeah. So the really nice song. This is definitely on my playlist. I'm getting it started. Absolutely, I'm a kid. So let's move on to the next song, which is Velli. इसमें है सब बहुत लोगों ने मेरे को ये गाने के बारे में बताया. दसना आशिकी मैनू कहंदी दी ज़्यादा ही आज़ादी तैनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दीवी निशानी पंजाबी गाने. दसना आशिकी मैनू कहंदी दी ज़्यादा ही आज़ादी तैनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दीवी निशानी तैनू ले जा इन्हें भी मुझे नहीं चाहिए ये खैराते तेरी तू ले जा इन्हें भी सीने में तेरी बच्ची है ये पता तुझे भी इतना ना पीछे पड़ो मेरे जाना तुम खुद भी फर्रे भी इन बातों पे कितना लड़ेगी तेनू हुंदे से ना खाए मेरे जाना इन आँखों से कितों से खेली मेरे बिन हो गई तू एकदम अकेली अभी मैं कहती मैं तेरे लिए वेली मैनू कहनी दी ज़रा ही आज़ादी तेनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दीवी निशानियां पहनू इससे ना आशिकी मैनू कहनी दी ज़रा ही आज़ादी तेनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दीवी निशानियां पहनू जख्म पे मरहम लगाती मैं फिर उसके जख्मों को ताजा कर देता हूँ मैं वैसे तो आशिक खामोशी का पर तेरी जुल्फों से बातें कर लेता हूँ तू मेरी हो के भी मेरी नहीं तो मिलने का मतलब ही बनता नहीं थोड़ा हजारों दफा तूने दिल को तो अब साला टूटने से डरता नहीं. Once again, sorry, I want to go back a little because once again how beautifully he's harmonizing with his voice. एकदम ही उसका जो low pitch में जो rap कर रहा है, that is sounding so good with this voice. This one, the higher pitch. जख्म पे मरहम लगाती मैं फिर उसके जख्मों को ताजा कर देता हूँ. वैसे तो आशिक खामोशी का पर तेरी जुल्फों से बातें कर लेता हूँ तू मेरी हो के भी मेरी नहीं तो मिलने का मतलब ही बनता नहीं थोड़ा हजारों दफा तूने दिल को तो अब साला टूटने से डरता नहीं मैं गाना ही करना था जाने मन पहले ही कह देती अपना बनाया क्यों अब गलियों में तेरी मैं काफिर और सोचूं बेवफा को दिल से लगाया क्यों तू थोड़ी सी मेरी भी सुन लेती तो शायद ये लम्हा ही आता नहीं कांटों पे चलना ही चाहती थी पहले ही कह देती पल के बिछाता नहीं तू कह दे सब गलतियां मेरी है चल तेरी ये बातें भी मान ली पर जब तेरी की वफा डोली कहना मत जाने मन तब मैं अनजान थी इन आंखों में दिखता क्यों प्यार नहीं जाना तू वफा से खुद भी बेजार थी अब पूछे वो हर दिन खुदा से क्यों करना मेरे प्यार की मेरी कदर क्यों नहीं तेनू जाना इन दर्दों को मैं ही क्यों झेलूं तू सहन से निकली ना मेरे पर हुण मेरी यादां नहीं आउंदियां दिसे ना आशिकी मैनू कहंदी दी ज़्यादा ही आज़ादी तैनू तोड़ के रखता तू मेरे दिल नू क्यों तेरी दीवी निशानियां पहनू तेनू हुंदे से ना खाए मेरी जाना इन आँखों से कितों से खेली मेरे बिन हो गई तू एकदम अकेली अभी मैं कहती मैं तेरे लिए वेली मैं तेरे कहंदी मैं सोचा सी ले लांगे फेरे ताही दा रहंदी सी मैं तेरे नेड़े वो कह के चला गया हम फिर मिलेंगे. हुआ ये सेकंड हाफ में क्या हो गया एल्बम को सडनली प्यार क्या व्हाट
Love is stupidity, everybody is stupid here. प्यार मूर्खता है, यहाँ सब बेवकूफ है. I might not agree. Okay, I agree in some sense that love is at times stupidity. We're near the end. सारे videos, 3 chapters left. Wow. Help me, please. Okay, he becomes psycho. Oh, nice. Oh, this was nice. सुन लो क्या ये गाना? सुन लो क्या ये गाना? ये गाना मैं रोज सुनती हूँ. By the way, ये गाना मैं रोज सुनती हूँ. Velli. Before we move on to the next song, Velli. Wow. ये भी प्लेलिस्ट में जाएगा. क्या हो गया? सेकेंड हाफ में एल्बम में कुछ हो गया है क्या? सडनली कुछ हो गया ना? I feel. I don't know. I feel like I'm reacting to different albums. It's not the same album. All of a sudden, I'm feeling that. Like, because after Deja Vu was the last one. And then, For My People, just completely, the vibe only changed of the album. And then Velli, even Spacenight, if you see, it's a very sad song. It's a very sad song. It has that synth vibe, and so it's so beautifully done. And here too, he's become psychotic, and the girl is saying that, please help me. Oh, बढ़िया था ये तो बहुत ही बढ़िया गाना था. Wow, I'm so happy. Like all of the songs have a video because it makes it more intense. And this video was also so freaking intense. I like the color. So I think consistent color जो मैं देख रही हूँ, it's like red, purple, pink. These are the colors that he used. And also वो जो old video recorder का वो जो ये है वो बहुत यूज हुआ है इसके वीडियोस में, which is nice, which makes it very consistent because that's his world. Astro world that he has introduced us to as audience, that's his whole world. So I like that. Even in Spacenight, in fact Spacenight तो I would say it's still pretty bright. मतलब जब वो स्टूडियो में गा रहा है, still a pretty well lit up, but still उसमें भी वो reddish undertones and all of that is still there. Though because I feel the entire music video, the way it has been portrayed to us, Astro World is a dark place. It's a dark place. Maybe he's trying to show like it's a very dark place inside his heart that he has opened up. क्योंकि बाहर से maybe Bella की जो दुनिया है, the Bella that we see in the public figure, maybe it's वो तो जो दिखता है, the way he shows, he's all nice and chilling with fans, making music and stuff. But maybe it could be a perspective like Astro World is something which is very, very deeply rooted inside his heart, and he's showing that particular side of him through this album, and that is why it is called Home. Guys, या तो मैं कुछ ज़्यादा ही इन डेप्थ डिकोड करने बैठ गई हूँ. सो चलो सुन लेते हैं स्पेस नाइट. क्या फर्क पड़ता है? और तो एक्चुअली ना अभी ना सूरज ना ढल रहा है, सो आई डोंट इवन नो इफ द वीडियो इज बहुत वो हुआ तो आई विल स्विच ऑन द ट्यूबलाइट. एनीवे, लेट्स. अब डेजा वू भी मैंने सुना था तो ये भी सुन लेते. सी द रेडिश थिंग. अब तो मैं टोटली रिवाइव करूंगी. मेरा कोई भी ना बाकी रहा है अब दुनिया में, तो मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं. तो मेरा भी अब, तो मेरा भी अब, तो मेरा भी अब, मेरा कोई भी ना बाकी रहा है अब दुनिया में, तो मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं. दिल तो मेरे तोड़ा लोगों ने लाखों दफा, तो मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं. मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं. This is my favorite song. अभी बाकी गाने बचे हैं, but I think till now Spacenight is my absolute favorite. मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं. मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं. मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं. क्यों सबको दिखता जानवर है आंखों में, आंखें में लोग कभी मेरे इरादों से, तो पल में टूटे दिल को ये सब छोड़ते, फिर कैसे मानूं कि ये सब है. I like this red undertone. हर तारे में मुझे तू नजर आती थी, ना बोलूं तू तो भी समझ जाती थी. अब पहले जैसा See, this is still bright. Still is bright.
मेरे दिल के किस्से को तोड़ा नहीं। जाना तुमने जो किया वो दुश्मन भी नहीं करेगा। तूने सोचा तेरे बिन ये लड़का जिंदा मरेगा, पर ऐसा ना हुआ, मेरा कोई ना रहा बेवफा। तो मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। I shouldn't sing. मेरी आवाज बहुत खराब है। No, no, no. I'll only lip sync. मैं सिर्फ lip sync करूँगी। मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। बेवफा तूने छूके मेरे दिल को कर दिया तबाह। जाना इस जहां में भी ना हो सका तू मेरा। अब मैं तेरी पायलों से बातें करता रहता हूँ। मेरी फेवरेट लाइन आने वाली है। जब मैं तन्हा रहता हूँ, जब ये तारे मुझे तेरी सारी ख्वाहिशें बताएं, तब हम दोनों मिलके जानम तुम्हें बेवफा बुलाएं। क्योंकि तूने जो किया है वो काफी है। भुला दूं अब तुझे तो इस गुनाह की माफी। My favorite line. सुना था कहानी मैं दिल से वो कह के गई, तू है पागल और मैं बेवफा। तो मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। I swear I told you मैं गाऊंगी नहीं, बस okay. मेरा भी अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। ये तो गाना रोज बजता है on my speakers. I love this song every day. मेरा भी वफाओं से अब लेना देना नहीं। Bella needs to make a song like this again. I need another song from Bella like this. I swear I am so freaking addicted to this song. पहली बात तो I'm really sorry मेरी बेसुरी आवाज आपको झेलनी पड़ी. That's okay. कोई बात नहीं. You can just skip this reaction because originally तो मैंने react कर ही दिया, तो you can obviously skip it. But स्पेस नाइट like literally अब तक मैंने जितने गाने सुने मैं तो वेट कर रही थी ऐसा कोई गाना आएगा क्या. Velli comes a little bit close, but still Space Night, like even Monster came a little bit close in dethroning Space, but still Space Night still holds the top spot till now from all the songs that I've listened to for me till now. अब अगला गाना सुनते हैं क्या है. Collapse. So Collapse, Damn, Antidote. और बहुत ही अंधेरा हो गया. Should I? Okay. अभी भी light है. See, purple, red. This is the color. Oh, ये क्या हुआ? सुनाई दे रही आवाज़ें मेरे ज़हन में तुम्हारी है, जाके भी मेरी दोनों आंखें खुले पारी है, दुनिया से दूरी अब तू बेहतर लगती जा रही है, हमारे नंबर तो leaves me, रहता हूँ मैं solo. I'm sorry, I'm pausing. I swear कुछ तो हो गया बेला को जब वो second half of the music album बना रहा था. I don't know. It sounds like a totally different album to my ears all of a sudden after Deja Vu. It's amazing. Like I'm saying this in the best possible way. This is like literally every song like from For My People से एक गाना. I have literally barely any complaints. मैं सारे ऐड कर रही हूँ अपने प्लेलिस्ट में. फॉर माई लाइक डेजा वो तो किया ही हुआ है, स्पेस नाइट तो किया है, बट कोलैप्स भी होगा. तो जस्ट द साउंड 30 सेकंड हुआ है गाने को, 30 सेकंड भी नहीं हुए, 29 सेकंड्स. इट ऑलरेडी फील्स सो गुड टू लिसन टू. अमेजिंग. मेरे जैसा कोई नहीं, show me गाने मुझे और दो ताकि कर पाऊँ और grow. गाने मुझे और दो नाम ताकि क्या है मेरा और सबको मालूम है, जीना ना सीखा कभी भी इशारों पे. मैं देखूं ना नीचे अब जमीन पे, लोगों को लगे मैं चलूं अब तारों पे. कहानियां मेरी गुमनामी से ले आई मुझे एक अलग ही रेस में. ये रैपर्स करेंगे वही जो देखा है जैसे कोई केवमैन. हाथों पे इल्यूमिनारी पर मेरा मानना थोड़ा अलग है. पाप तो सभी के अंदर है, पैसा गिराया तो बदलता धर्म है. मैं जाता खिलाफ ना किसी के तो शायद मेरे भी बनते नहीं किस्से. जो खोया है यहाँ तक आने के लिए इन आंखों में उसी की शर्म है. बना नहीं ट्रेटर, माँ बोली ब्रेकर, मुझे बस दिखता रहा सैडन. पढ़ा नहीं इन आंखों. मैं जाता खिलाफ ना किसी के तो शायद मेरे भी बनते नहीं किस्से. जो खोया है यहाँ तक आने के लिए इन आंखों में उसी की शर्म है. बना नहीं ट्रेटर, माँ बोली ब्रेकर, मुझे बस दिखता रहा सैडन. पढ़ा नहीं बेबस, बदल दिया स्टेटस 10 गुना ज्यादा ली I पेमेंट्स. love he changed his flow. मेरी आंखों में ये दुनिया तुमसे दूरी रख के 10 गमों पे हंसती है, तो बैठा मैं गाड़ी में जा तेरी यादों में. आंखें मेरी Nice. बातें ना करती मुझसे अब क्यों कोई निशानी तेरी. जब से तुम मेरे नशे में हर आदत में शामिल हो गए, खुद अपने दिल से पूछो तुम कितनों के कातिल हो गए. सुनाई दे रही
आवाजें मेरे जहन में तुम्हारी, चाके भी मेरी दोनों आंखें खुल नहीं पा रही। दुनिया से दूरी अब क्यों बेहतर लगती जा रही, ये दुनिया मुझको अपने चेहरों से मिला रही। फेक्स सबके प्राइस टैग ऑन देयर फेस, जो अपना नहीं वो बिल्कुल भी नहीं करना क्लेम। मैं म्यूजिक पढ़ के बैठा, यू गो ट्रेन अगेन। I sell music for my people, ये म्यूजिक कोकेन, ये मेरा गेम। तू रियल नहीं है, पता है? तू कभी रियल थी ही नहीं। तू हमेशा से कंफ्यूजन। क्या हो गया तेरे को? कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है? पागल हूँ मैं? Oh, it's the opposite now. Wait, this is getting. Listen, guys. Oh, I thought गाना खत्म. Sorry. दिल्ली के लौंडे हम बातें नहीं छोड़ते, मिलो मत मौत से स्टे ऑन अ फोन कॉल। ये क्या हुआ? में थोड़ी सी सॉस डाल, न करा कर बाप से कोल्ड वॉर मांगी नहीं। एक minute. I'm sorry, I'm pausing so much in the song because I was not expecting that change. Wait. के प्राइस टैग ऑन देयर फेस, जो अपना नहीं वो बिल्कुल भी नहीं करना क्लेम। मैं म्यूजिक पढ़ के बैठा, यू गो ट्रेन अगेन। I sell music for my people, ये म्यूजिक कोकेन, ये मेरा गेम। तू रियल नहीं है, पता है? तू कभी रियल थी ही नहीं। तू हमेशा से कंफ्यूजन। क्या हो गया तेरे को? कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है? पागल हूँ मैं? Okay. And then suddenly मुझे actually लगा गाना खत्म हो गया. दिल्ली के लौंडे हम बातें नहीं छोड़ते, मिलो मत मौत से स्टे ऑन अ दिल्ली के फोन लौंडे। कॉल। समोसे में थोड़ी सी सॉस डाल, न करा कर बाप से कोल्ड वॉर मांगी नहीं किसी से फेम, तो आंखें क्यों नीचे झुकाऊं? मैं मेरे गानों से कम मारा, तो तुझे क्या जितना उड़ाऊं? तुझे क्या जितना गली के भौंकते कुत्ते काटते नहीं, ब्लेड गले पे बाप का रास्ता काटते नहीं। ब्रेन जाम तो वीट के नशे में खासते नहीं, ये वीक के अंत में लिखते रैप और उसे चला के फिर नाचते यही। Okay. सभी को बनना है फेस पर फेस नहीं करना कोई रिस्क, फिर पूछेंगे सबसे कैसे मैं बनूं अब सीन में डबल ए लिस्ट। I got 50 shades खींची पर्पल हेज, ओके लेट्स गो रैपर हुए कुत्ते फेल फक। ये Wow, his flow over here. कुत्तों को मिली नहीं बेल, ये गाना सुना के खारिज किया केस। शूट पे शूट पे शूट पे शूट मैं बिजी हूँ जैसे मैं ड्रेक, तो सिखा के ये भेजा है तेज। पाली का जीन्स थी हाथों में चेन्स, अब बात के कदम को ट्रेस कर। मेरे लिए लौड़े पे सेंसर्स, ये रैपर्स रैप नहीं होता तो सभी ये बन जाते एंकर्स। पैंचोद यहाँ पे कोई दिल से बोला तो लगता है टैंट्रम, मेरी जगह होता डेड इन द फर्स्ट प्लेस। ये सोच से मरे लाइक कैंसर, कर दिया शो मैंने कैंसल। पेटी से नीचे नहीं एक्शन, मैं जेके हूँ जेडन और जैक्सन, जब चाहूँ तब दे दूंगा एंथम, ये भी एक एंथम ब्रो। Wow. I like how he brings the older footages back. ये तो एस्ट्रा का था. Monster. I was raised by the wolves. Yes. This was. I'm coming for everything. See, here also, जैसे एक्चुअली वो थोड़ा बीट चेंज हुआ ना कोलैप्स का, मुझे लगा कि आई थॉट दिस वाज गोइंग द एस्ट्रा वे, क्योंकि एकदम से आई वाज लाइक थ्रोन ऑफ कि सडनली क्या हुआ। मुझे ऑनेस्टली लगा था वो मिड पॉइंट पे कि गाना खत्म हो गया, बिकॉज आई डिडंट लाइक वाइब टू एस्ट्रा दैट मच, बट सरप्राइजिंगली इन कोलैप्स, बिकॉज the vibe also changed a little bit, but it sounded even more gangsta in the second half, so that's why I think Collapse, I like the change in Collapse. I actually liked it. Like, I could not vibe to Astra, but Collapse is definitely something that is, this change or the switch is done pretty well here. The switch is done pretty well here, so I'm really happy with that. And specifically in the second half of the song, his flow was absolutely phenomenal. It was phenomenal. I like how it was, you know, a little bit dark and very gritty in the first half of Collapse. I actually noticed now like it's a 4-minute song. So, do 2.5 minute ek part, you know, then the remaining, you know, in that complete rap. So I liked how it was melodious in the first one and it was so freaking gritty and dark. And then suddenly he just became all gangster and I was like, I'm coming for all of you. Yes, I'm coming for everything. That was something different. Good. I like that. And here also, so see the
Astro World is pretty dark, and I feel a little bit weird thinking that okay, इसकी कभी किसी के साथ कोई झड़प नहीं हुई है, but he is also taking like digs generally. Now it could be like a songwriting thing, because usually now what I am really used to in hip hop is सब अपने बारे में बात करते हैं, अपने struggles के बारे में बात करते हैं, which is fine. क्योंकि हिप हॉप में जो भी लिरिक्स होता है, इट इज मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, सो इट इज द ट्रुथ, वी टेक इट एज द ट्रुथ एंड वी सीज दैट द आर्टिस्ट इज बीइंग ऑथेंटिक, बिकॉज दैट इज व्हाट hip hop is all about, you know, the artistry being so authentic with, you know, your life, you are sharing your life in a very poetic, rhythmic way. It's like that. So, and I feel like with Bella also, there has been, even though I don't know, because I have never really you know, read anything in the comments specifically that okay, this has happened, this is his story particularly. And you also told me like in the last video that yeah, he doesn't have any issues with any of his peers on stuff like that. But so it could be either a songwriting thing that okay, this is because Astro World is maybe like that and he has created this world, or definitely generally maybe something happened. So yeah, because once again this is pretty dark for my people. से तो मतलब album का रुख ही बदल गया, I would say, and now I think I should turn on the lights, it's become pretty dark. Yeah, so I guess this is fine. I don't know why I didn't switch on the lights, but मेरे को फिर गाने के बीच में रोक के ना, I realized कि you know अंधेरा हो रहा है, but फिर मेरे को गाने के बीच में रोक के, you know, I was like कौन उठ के लाइट ऑन करेगा, गाना सुन लेता है पहले पूरा. So yeah, so basically in Collapse, I feel that there is a lot of, I don't know, he's keeping maybe a lot of things inside, because that's what the album overall feel is giving me, that there is, maybe he has created around him a world of illusion, like because उसमें बोल रहा था कि तुम एक illusion हो, you are not real. So maybe he feels that everything around him, since he gained so much success and all of that, everything feels like an illusion and not real. And I don't know, maybe he's not able to sort of differentiate between the real and the fake, and he feels that the world is collapsing on him. That would be one way to see it, I guess. That would be one way to see it, because then the girl also says कि भाई तेको हो क्या गया suddenly, तेको हो क्या गया suddenly, because her pointing the gun at him in the first shot, that probably is not real. He feels that it is real, and then because he's mentally so stressed out and feeling so anxious, that at the end he said, you know what, I'm gonna just take the gun and point at her. So, and then in the second half of the song, he sort of is trying to explain through his verse why he's feeling that way, that you know everything probably is an illusion and not real, people are being very very fake and all of that. That one line where he said कि भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, तुमको क्या प्रॉब्लम, मैं कितना उड़ाता हूँ, how does it matter to you? So yeah, वही बात है ना, दूसरे के जियो और जीना तो दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है. That's the thing. So yeah, that was Collapse. Definitely adding this to my playlist. I like the switch over here basically. Oh, क्या हुआ? So we will move on to the next song, which is Damn. Mic check. मेरा नाम क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं बोलने को, ये सबको मालूम कौन हूँ. अच्छा, इसका म्यूजिक वीडियो नहीं है इसका. ओके, इट्स जस्ट द एल्बम तेरा, सोलो तेरा, वीडियो तेरा, रोक के देख. 2 के 11 देखा मैंने, बाप को पीटते माँ को मेरी. 2 के 12 बाप ने मुझको पहली फुर्सत भेजा जेल. म्यूजिक सरहद पार बचता हूँ, तेरे लिए बस एक रैपर हूँ जो सबसे चलता हूँ. मेरी माँ के लिए बेटा उसका हीरा हो गया, पसीना लाख में बिके मेरा नगीना हो गया. ये कुत्ते देखे मुझे भौंके मगर काटने को नहीं आते. इंटरव्यू में भाई बोल के थाली बांटने को नहीं आते. हर कोई पैसा मांगे शेयर का तो हम भी मांगेंगे. हम ऐसे कुत्ते पालेंगे और ये बस वहम पालेंगे. स्टोरी लाइन वाली एल्बम जबकि स्टोरी कोई नहीं थी, तुमने खुद जोड़ी, मैंने तो बस ख्वाहिश पूरी की. हर एक दर्द मेरा तुम्हें इतना अपना क्यों लगा, हर एक सच मेरा साला तुम्हें सपना क्यों लगा. मैंने खाना पीना छोड़ मिक्सिंग यूट्यूब से ही सीखा. 2-3 लोगों का आभारी हूँ जो देते रहे साथ. बंदी गाड़ी घोड़ा मुझ पे फेमस होने के
के बाद आया, लेकिन 11 साल की उम्र से मैं पढ़ रहा कितने साल। एस्ट्रो वर्ल्ड मेरे जहन की आवाज बनी, उसके बाद एस्ट्रॉइड सीने का मल्लार बनी। राइट मेरी जंग अपने आप से थी, हार बनी। उसके बाद कोल से इंस्पायर्ड होके मारी मैंने वापसी। देख कौन आया वापस। इसका स्टाइल, इसका स्लैंग, इसकी वाइब कॉपी है। मुझे डीएम करे लड़के तुझे डिस करना है, पर मेरी पिक्चर लेके तेरी बहन अकेली सोती है। I'm spitting facts। अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर, पर अंग्रेज रैपर डीएम करके बोले देश छोड़ और इधर आ। ये मुझ पे खुदा मेहरबान, नहीं मैं करूं इतनी मेहनत, मैंने कभी खुद पे यकीन छोड़ा ना। मैं मजाक में बना दूं गाने, यहाँ के आर्टिस्ट लेवल लोग से पैसा लेके भूल जा रहे। ये वीडियो के लिए होते हैं तैयार, ऐसे जैसे छठी पास नया बैग लेके स्कूल जा रहे। फ्यूजन करता म्यूजिक का और रखता भारी हाथ, ये डरते हैं कि खा जाएंगे रिस्की होके मात। मैं विस्की पी के किसी में भी राज अपने खोलता नहीं, सच्चे दोस्त को मालूम है मैं अच्छे दिल को तोड़ता नहीं। जनता मुझसे पूछे तेरी एल्बम इतनी लंबी क्यों है, लंबी है तो गाने इतने छोटे क्यों है, छोटे हैं तो गानों में जो स्टोरी है वो अलग क्यों है, अलग है पर तेरा म्यूजिक इतना ज्यादा गलत क्यों है। कभी नहीं था बातू नहीं, बचपन मेरा शान स्वभाव, और बाप को चाहिए हो जाऊं मैं हर क्लास में पास। थी ना उम्मीद मेरी कलम जब ये ठाना के मैं रैपर हूँ, अब किसी को बताना ही नहीं पड़ता कि मैं रैपर हूँ। I feel like honey sing, मेरा म्यूजिक अलग बजेगा, पर फर्क यही रहेगा कि बेला नहीं थमेगा। ऐसी नो डेंजर जोन, मुझे सब करना आता है। म्यूजिक सामने रख, तूने पढ़ा है मैंने जाना है। दुनिया दूर से मजे लेके ऊपर चली जाएगी, पिक्चर कैसे डीएचएच में एवोल्यूशन लाएगी। खुद के लिए खड़े होना पाप हो गया जी, यहाँ पे हाइप देके पालने वाला बाप हो गया जी। ऑडियो में मिलियन लाने वाला विजन है, तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो। तू 4K में मेरे वाला साउंड लगे फेल, मेरे 420 में ही इतनी क्वालिटी है ब्रो। मेरा क्लास 11 फेल मगर मेरी शुरुआत, छोड़ है पहले गहराई को जान। जो इन्हें चाहिए था वही कलाकार हूँ मैं, धीरे धीरे हाँ जी कह के रही जान। बातें मेरी इन्हें पकी दो, इन्हें चाले पसंद है भाई इन्हें रमी वमी दो। गाने फेंकूं जैसे भूखा शेर खुला हो गया, और यहाँ के रैपरों का कलाकारी मुर्दा हो गया। मैंने बोला था कि छोड़ रहा हूँ म्यूजिक 2020 में, क्योंकि मुझको गाने देना बेस लग रहा था। मेरी फेम मेरी जीत तुम्हें फेक लग रही थी, वहाँ नींद मेरा चैन सब हराम हो रहा था। What the fuck? तुम्हें किसी की भी पड़ी नहीं है बुद्धि, जैसे बल्ब बिजली भरी है पर जली नहीं है। व्यूज देख के कमेंट आ रहे गानों पे के एल्बम तेरी अच्छी है पर बुरा लगा चली नहीं है। डैम इसे चलन कहते हैं ब्रो, अपने इधर अपने म्यूजिक को हम वचन देते हैं ब्रो। पहले हील करेंगे फिर हम पैसा छापेंगे, फिर वो पैसा अपने लोगों में हम खुला बांटेंगे। ये मेरा शौक, असली बनो चर्सी बनो मत, लाखों लोग कमा के अपने से तुम फर्जी बनो मत। समी पे पैर बस अब अलग जीता हूँ, मेरे गम ना बता दूं इसलिए ज्यादा पीता हूँ। ये तेरे वैम है कि मेरे जैसा आया है और चला जाएगा, बेला लंबा खेलेगा और ज्यादा खाएगा। छोटे बॉलीवुड को बेलावुड बनाऊंगा, तू बस देख रहा था देखता रह जाएगा। वाह ये मेरी एल्बम है होम, ये बस मेरी शुरुआत है। मेरा नाम क्या है? चल Proper hip hop ग्रूव sound. कर। I love his cadence here. Damn. Damn, yo. Proper. अच्छा ये bonus track था Antidote. Okay. This was the complete flex and I loved it. It's a great outro. Like it concludes literally everything. Because he talks about his family, he talks about his struggle, he talks about fake people, he talks about his friend, he talks about his love life, he talks about the money he made, he talks about the reality show, like people discrediting his win. He talks about the album, and specifically in that एक verse था उस गाने में जहाँ पे वो बोल रहा था कि तुम्हारा एल्बम अच्छा है पर चला नहीं, लंबा है गाने छोटे हैं। मतलब लिटरली एक पॉइंट बोलते थे तो एक पॉइंट पे अगर वो काउंटर करेगा तो दूसरा पॉइंट आ जाता था। बेसिकली कुछ भी टू डिसरिगार्ड दैट एल्बम, बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं, इसको जेलसी बोलते हैं। सो ही हैज बेसिकली, आई लव द फैक्ट दैट ही हैज समराइज्ड, this is like a great summary of the entire album. This is a great summary of the entire album. It absolutely covered each and every aspect of his life. That was fantastically done. And the beat did not change. The flow did not change in the sense that her verse mein there was the same flow. It was not changing. But his cadence was fantastic. He was aggressive. He had passion in the way he was delivering all his verses. But the main thing which was my takeaway is the summary. It was the summary. So I'm guessing of course, actually क्या होता है ना, firstly you can't be a people pleaser.
यू कैन बी अ पीपल प्लीजर, ठीक है ना। अगर आप एक ओपिनियन दोगे तो हो सकता है बहुत लोग आपसे अग्री करें, लेकिन पूरी दुनिया में मतलब अगर आप ऐसा भी कभी नहीं होगा कि इफ़ यू आर गिविंग एन ओपिनियन, पूरी दुनिया के 99.99% लोग अगर अग्री भी कर जाए, दैट 0.01% will be there which is going to disagree with you. So you can't be a people pleaser. So I'm guessing that his win in Hustle, maybe it was like, he deserve नहीं करता and all of that. And then he talked about कि 2020 पे उसने गाने नहीं बनाए, उसको मन नहीं किया and stuff like that. But he at the end that flips and he says that भाई ये बॉलीवुड को बनाऊंगा मैं बेलावुड. So that's why बेलावुड. हाँ, पहले मुझे समझ नहीं आया था ये बेलावुड आप लोग क्या बोलते थे, बट अब मुझे समझ आ रहा है. So yeah, wow, this is something that in the moment, like when I'm listening to it right now in context of his entire album, I love it. But this is not something that I would play it on my playlist basically, क्योंकि मतलब प्लेलिस्ट में आई वुड बी लाइक भाई वो अपनी कहानी बता रहा है. सो आई वुड प्रॉब्ली लिसन टू अ सॉन्ग विच इज मे बी लाइक मोर वाइबी in terms of its melody and hook, or you know, rap with hook usually. But this is a nice song. I wouldn't say कि it's not a nice song, something that I completely vibe to it, but it is not something that I would play on repeat, because in the context of the album and the outro, see that's why अगर मैंने इसको independently सुना होता कि पहला बेला का गाना मैं सुन रही हूँ damn, I would have enjoyed it. But right now I'm loving the meaning of the song behind it, because मैंने पूरे पहले के सारे गाने सुन लिए. So the lyrics hit me even more. I completely understand from where his perspective is coming and what he's trying to say and with what meaning he's trying to say. So that makes a huge difference, and that is why when you're listening to from the intro, interlude, and coming to the outro, then it makes sense. So अगर मैंने damn ऐसे independently सुना होता, I was like, हाँ अच्छा गाना है, not bad. I like his flow, his cadence is nice, beat भी अच्छा है, vibey, up, you will nod to the beat. But now, because I listened to the entire album, I'm like, I feel you, yes, good going, you go. Very motivating. It's like that. So moving on to the bonus track, guys, Antidote. बीच में Antidote का नाम आया था. So this is a bonus track. So this is really not an outro. So I'm guessing maybe it's not related to the storyline. We will see. Let's see. तो ये भी ऑडियो ही है, ये वीडियो नहीं है. डैम का वीडियो होना चाहिए था. I feel डैम का तो होना चाहिए था. Oh, with that I remember वो 4K and 420p वाला जो dig लिया, that was also nice. That was nice. Straight up. Damn. बस यादें थी लिख दी इस कागज पे, एल्बम तो बोला तुम लोगों ने, 10 गाने जोड़े और एल्बम का नाम देके सबको सुना डाले. परवाह नहीं अब तुम लोग क्या बोले, ये दुनिया की आंखों में हम थोड़े चेंज है, मेरे पे सभी के ब्लेम है, अपना तो कागज का प्लेन है, होठों को सिल्वर ना जेल है. डैम एस्ट्रो मेरे खिलाफ थी मेरी आवाज, एस्ट्रा शुरू से थी मेरे दिल का पहला मलाल. ये एल्बम चली नहीं, पलट के देखा तो सब बोले वंस मोर. शुरू से रखे हैं कम दोस्त और बोले ये मैं ऑन अ ड्रग डोज. पापा को पसंद नहीं आता था, स्कूल के पेपर पे गाने लिखाता था. अब मेरे स्कूल की टीचर भी फैन है, टीचर की बेटी का बंदा भी फैन है. मेरे से कॉपी कर रहे मेरे स्टाइल, मुझको नहीं फर्क मैं कर रहा हूँ स्माइल. गानों पे चाहिए नहीं पैसे से हाइप, जिनको मैं पसंद हूँ खुदा का भाई. ये कैसा लूप, वो कितनी तकलीफ है, कितने सवाल है, ये तेरे गानों में कौन तेरे साथ है, बंदी जो बगल में क्या तेरा प्यार है, पीछे जो खड़ी है क्या तेरी कार है. एल्बम के गानों में क्यों इतना वक्त है, पहला तू कॉकी है क्योंकि मैं मर्द है. लफ्जों में जान है, कागज में दर्द है, मंजिल शांत है, ये मेरा कर्ज है. भरा बारूद इन हाथों की नब्ज में, खोले जब टूटे हुए ख्वाबों के बस्ते, कैसे हम दुनिया के दलदल में धंसते. Damn. पूछा मुझे सबने कि क्या है तेरी एल्बम का कॉन्सेप्ट. कुछ लोग इसे मानते हैं नॉनसेंस, कुछ लोग इसे मानते हैं सक्सेस. कुछ भीड़ में बस फेंकते हैं बोतलें, कुछ देख मुझे लेते हैं हौसले. TBH मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या होगा मुझे डर ही नहीं लगता है. पहला इतना नेगेटिव क्यों है, मेरे गाने सुन सर क्यों पकड़ता है. मेरे वाला साउंड सब लाना चाहते हैं, शिट कोई अपने दिल की नहीं सुनता है. मारा तीर लगा बुलजाए, मीम बना भला अभी पुष्पा है. सीन मेरे जैसा और ढूंढ रहा है, क्योंकि ओजी यहाँ खुले आम घूम रहा है.
अभी हिट मेरा एक गाना नहीं, अभी हिट मेरा हर गाना है। हाई स्टूडियो में घुसते हैं बाद में, बोले पहले मुझे घर जाना है। घर अभी पापा मेरे डांट रहे हैं, बोले गाना माना छोड़ रहा हूँ। ये असल मेरे बस की बात नहीं, बोले घर पे माँ बाप का लौटा हूँ मैं। अकेले बैठ रोता हूँ मैं, कि दुनिया को हंसने के मौके दूं। ये मिट्टी में सोना हूँ मैं, कि दुनिया को खुद को मैं पाने दूं। किस किस को जवाब दूं मैं इस दुनिया में है लोगों के सर पे। पैसा शोहरत की बात है, बस हम ही डूबे बाकी किनारे पे। कमजोर हूँ मैं शायरी में, पर है जुनून मेरी गायकी में है। सब पसंद जो है सादगी में, फूलों से प्यार हूँ मौसमी में। तब वो गरम है 12वीं में, जब घूमता था मारुति में। GMT से चांस ने नोटबुक में लेके मेरी तकलीफ है। अभी ने मेरी सक्सेस देखे जैसे हाईवे, DM में बोले मुझे तेरे लिए आसान है। दिल्ली तेरी जगह है और बॉम्बे में मकान है। बिना मुझे पूछे ये सब ऐसे कैसे छाप है। मुझे ही नहीं पता मेरे नाम के क्या फायदा है, तो फिर मेरे जैसा यहाँ टिक कैसे पाएगा। डर नहीं चाहिए किसी से भी कोलैब, पहले खुद ही के नाम से कमाएगा। फिर सभी होमी लोग साथ में खिलाएगा, एक तेरे हिट को मैं पैसा बनाएगा। देख मेरी सोच से मैं कहाँ तक जाएगा, देख मेरे म्यूजिक को फ्यूचर बनाएगा। डैम डैम This should be named as outro part 2. Oh, that should have been outro part 1. This was outro part 2, because I feel Damn and Antidote are like two sides of a coin. That's what I feel like. But before that, let me stop this and woo! We finished Bella's album, Home, the album. Guys, this was a fantastic sound, something very different. And I liked it because this is, you know, your ears also need a little bit stimulation sometimes कि कुछ एक different artist से कुछ अलग सुनने को मिलता है. And this album gave me that. This album gave me a lot of variety. This was a very good mixture of rap, song, and melody and melody rap, and what should I say, auto-tune rap. I don't know what's the technical term, guys. But this gave me like all of it, basically, all of it. And you can pick and choose basically कि आपको जब आपको किसी एक टाइप का वाइब का गाना सुनना है, आपको पिक कर सकते हो. सो आई थिंक देयर इज अ सॉन्ग फॉर एवरीबडी. ऐसा नहीं होगा कि सारे गाने, हो सकता है कि सारे गाने आपको इवेंचुअली अच्छे लगे, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड योर ओन वाइब. जो जैसे गाना सुन के आप, जैसे फॉर मी इट्स स्पेस नाइट. बिकॉज सिंथ पॉप इज समथिंग दैट इज अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन. कोई भी गाना जिसमें ऐसे सिंथ होता है या 80s वाला जो पॉप वाइब रहता है, दिस समथिंग आई पर्सनली एंजॉय. So that is why Spacenight was instantly, if you see my original actual reaction of Spacenight, I was like, मैं तो मतलब पागल ही हो गई थी in a way. So I again couldn't skip this song. But Antidote and Damn, I think if you listen to Damn and then Antidote together, one by one, it just gives you such a wholesome perspective. So that's why I said कि maybe this Damn should be called outro 1 and Antidote should be called outro 2, because Damn is more aggressive. Okay, he's talking about everything in a very, very aggressive way, but Antidote is more on the mellow side, yet he's keeping his point across. More or less the theme of both the song is similar. More or less it's similar, in the similar lines. That's why maybe he called it as a bonus track. Probably Antidote also could have been an outro, because उसमें भी हर चीज़ की एक पूरी समरी है. But Damn is much more powerful, and I think maybe that was the decision to keep it as the official outro, because you want to go out of this album with a complete banger and say that yes, this is what this album is and this is what it means, and I'm stepping out of this like a boss. Antidote is more humble down, I would say, in its narration, because he talks about literally everything, about his family, about his sound, trying to make something different sound, and then people talking about him, and then वो teacher के बारे में बोला पहले तो मना करते थे, now teacher ही मेरी fan है, and all of those things. So very, very similar kind of lyrics, I would say. But I think Antidote is more vibey,
in the sense. Damn was more hardcore hip hop. So I think आप दोनों में से किसी को भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आउट्रो मान सकते हो. For me, both are powerful outros, but Damn is definitely a more, in terms of the way he is rapping, that's a more powerful outro to have for this album, because it very, very aggressively and very, very, assertively summarizes everything, and it's a powerful outro to have. So that was the album listening, guys. That was the final part of the album listening. Antidote also is going on my playlist for sure, because it's quite vibey, that's why. And even Damn I will add. We'll see. I'll add all the songs, and then trial and error, जो भी पसंद आता है बहुत ज़्यादा, then I keep it. Otherwise, when I realize I'm not listening to it as often, I remove it. So that's the way to go about it, I guess, for songs. For me, my top picks, guys, I want to know your top picks from this album. Top 5, top 3 बता दो. For me, Spacenight, my favorite song from the album. It is Spacenight. It is, no song came close to it. Honestly, like, it has my heart. It मेरी जान है, Spacenight. So Spacenight definitely is number 1. Oh my god, now it becomes difficult. I think, let me just listen. Second mein, I would say I would put Monster. I would put Monster. Spacenight, second mein I would put Monster. And third is, I'm a little confused between I'm a Kid and Velli. I like both the songs. Even Collapse is a nice song. But I think because I was not expecting this vibe like at all, so I would probably go with Velli. Like Velli जैसा गाना मैं expect ही नहीं कर रही थी इस album में होगा. It's a very different sound from the entire album. It's very dark and gritty. And I like that additional Punjabi verse जो उसने बीच-बीच में hook में use किया है. So I think Velli comes in third. That would be my top 3. Spacenight, Monster, and Velli. So yeah, so that's it, guys. That's it. That was the album listening. I hope you had a good time watching this video. I definitely want to know your thoughts in the comments below after this. So I'll tell you, I was actually planning on doing King's album, Gorilla Bounce, but then Stan ne apna album drop kiya, guys. I have to listen to Insan. I'm literally dying to listen to the Insan tracks. And मैंने track list देखा. So there's one collab with Raftar, one with Ikka. I'm so excited to listen to those songs. And I want to see how much, like, because जब last and Stan के reaction में मैंने बोला था कि I want his album to have a mix of both, mix of like mumble and maybe his actual rapping, which I'm so fond of. So let's see how it is. Don't tell me album में क्या है, कि mumble है या वैसे rap है या सिर्फ mix of both है या क्या है, मुझे मत बताओ. I want to go into it absolutely blind. So yes, on that note, I will end this reaction here. And yup, signing off now, guys. Bye bye.